Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 12th problem of cash book from Intermediate First Year Accountancy. Now let us begin with our problem. 1st March 2019, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों हमारे एसेट है. ठीक है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू move towards the debit side. We'll write the date in the date column 1st March 2019, and in the receipt column we will write to balance brought down, B/D. Now let us see the amount of cash in hand, that is 4,900 and 5,100 cash at bank. So in the cash column we will write 4,900 and in the bank column we will write 5,000. Let us see the next transaction, that is on 3rd March, deposited cash into bank. ठीक है, हम क्या करें, कैश बॉक्स ओपन करें, कैश लिए, बैंक को जाके डिपॉजिट कर डालें. देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक. तो जब कभी भी कैश बॉक्स और बैंक का डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट करती है. इमीडिएटली वी विल पास द जर्नल एंट्री इन रफ. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक? बैंक अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट, बिकॉज बैंक इज अ रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है, सो अब ये जर्नल एंट्री को गौर से देखो आप. जर्नल एंट्री में टू के साथ कैश अकाउंट है, सो वी विल राइट टू कैश अकाउंट ऑन द रिसिप्ट साइड, टू कैश अकाउंट, एंड वी विल राइट ऑन द पेमेंट साइड बाय बैंक. टू कैश इधर आ गया, बाय बैंक इधर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अवर जर्नल एंट्री, बाय बैंक account. Let us see the date and the amount. The date is 3rd March and the amount is 3,000. So we'll write the date, that is 3rd March 2019, and in the LF column we need to write C. ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है, पहचान है, किसकी? कॉन्ट्रा एंट्री की. So here also we have to write the date, that is on 3rd March 2019, and slightly we'll adjust this, and in the LF column we will write C. Right? So always remember, as per our procedure, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए अमाउंट कॉलम, जो भी इसका अमाउंट रहेगा, ऑपोजिट कॉलम में एंटर करते हैं. जैसा कि इधर आपको कैश दिख रहा, सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस इन बैंक. अमाउंट इज 3,000 और इधर क्या दिख रहा है आपको? बाय बैंक. तो इसका अमाउंट किधर एंटर करेंगे हम? बैंक है तो कैश कॉलम में. द अमाउंट इज ₹3,000. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज on 6th March, सेल्स 9,800. तो जब कभी भी हम सेल करेंगे, हमारे बिजनेस में पैसा आता, तो पैसा आया तो हमको किधर रिकॉर्ड करना है? ऑन द रिसिप्ट साइड, दैट इज ऑन 6th March 2019. एंड पैसा आने के पीछे रीज़न क्या है? हम क्या करें? सेल करें. सो वी हैव टू राइट सेल्स account. What is the amount? The amount is 9,800. Then let us see the next transaction. 10th March, received a check from Reddy, 2,500. Always remember, जब कभी भी हमको चेक मिल रहा, we will wait. फिर आगे के ट्रांजैक्शंस में देखो, चेक कर रहे हैं हम आगे जाके कि ये जो रेड्डी के पास से जो चेक हम रिसीव करे थे, वो 10th के दिन ही डिपॉजिट हुआ या फिर कोई आगे की डेट पे हम डिपॉजिट करें, 18th के दिन हम डिपॉजिट करें. रेड्डी इज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सो व्हाट डज दिस मीन? 10th के दिन चेक मिला और हम उसको कैश बॉक्स के अंदर रख दिए. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19th के दिन, सॉरी 18th के दिन क्या हुआ? आप वो चेक को लेके बैंक में डिपॉजिट करें. सो टिल 18 रेड्डी का जो चेक था ना, वो हमारे कैश बॉक्स में रखा हुआ था. That means we are not depositing the Reddy's check on the same date. ठीक है, तो अगर हम डिपॉजिट नहीं करें तो हम रखें किधर उसको? कैश बॉक्स में. सो वी हैव टू एंटर दिस 2,500 इन द कैश कॉलम. राइट? सो हमारे बिजनेस में पैसे आए तो हम रिसिप्ट साइड लिखते. वी विल राइट द डेट फर्स्ट, 10th March 2019, एंड इन द रिसिप्ट कॉलम व्हाट वी नीड टू राइट? ये चेक मिला किसके पास से? रेड्डी के पास से. So Reddy's account. And remember one thing,
वो चेक हम डिपॉजिट नहीं करें, अगर डिपॉजिट करते थे तो बैंक अकाउंट में लिखते थे, वो चेक को हम किधर रखें, 10th के दिन हमारे कैश बॉक्स में रख डालें। सो वी नीड टू राइट इन द कैश कॉलम, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 2500, 2500। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज कमीशन रिसीव्ड 500, 14th मार्च। तो 14th मार्च के दिन क्या हुआ? कमीशन रिसीव हुआ, तो हमारे बिजनेस में पैसे आए, पैसे आए तो हम रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर दें। 14th मार्च 2019 टू क्या हुआ? कमीशन रिसीव करें हम, कमीशन अकाउंट। What is the amount? The amount of commission is 500. So we have to write 500 in the cash column. Let us see the next transaction. That is paid to Vamshi 1600. Discount received 400. अब हम पे करें तो we have to record this transaction on the payment side. What is the date? The date is 16th March. So in the date column, we have to write 16th March 2019 and here किसको पे करें हम? पेड टू वंशी, पेड टू वंशी, वंशीज अकाउंट, discount received is 400 and we have paid 1600. Done. Now let us move towards our next transaction, that is on 18th March. अब क्या हुआ 18th मार्च के दिन? रेड्डीज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये ट्रांजैक्शन का अमाउंट मिसिंग है, सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट रेड्डी के पास से पैसे चेक कितने का आया था? 2500। अब ऑब्वियसली चेक पे जो अमाउंट लिखा हुआ है वही रहता, बदलता तो नहीं। बस हम 18th के दिन क्या करें? कैश बॉक्स ओपन करें, रेड्डी का चेक लिए, बैंक को जाके डिपॉजिट कर दिए। सो अब हमको कंसिडर क्या करना है? कैश बॉक्स में आप जो भी चीज़ रखेंगे उसको हम कैश ट्रीट कर दें, ठीक है। तो क्या हुआ? रेड्डी का चेक डिपॉजिट करें तो कैश डिपॉजिट करे वैसा है, राइट। सो डिपॉजिट की एंट्री क्या आएंगी ये देखिए आप। सो व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिपॉजिट? बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। सो इधर टू किसके साथ है? टू कैश के साथ। हियर वी विल राइट टू कैश अकाउंट, राइट, एंड इन LF कॉलम वी विल राइट C, ठीक है। एंड हियर वी नीड टू राइट बाय बैंक, bank account, and in LF column we will write C. What is the date of this contra entry? contra entry ये contra entry है, कई को कैश बॉक्स खुला, चेक लिए, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए। Whenever there is a direct connection between cash box and bank, contra entry exists. So what is the date? The date is 18th March 2019 and here also 18th March 2019. And always remember what is the rule of contra entry? ऑपोजिट कॉलम में अमाउंट एंटर करना रहता। अब इधर क्या दिखा आपको? इधर दिखा बैंक, सो वी विल एंटर इन द कैश कॉलम 2500। अब इधर क्या दिख रहा है आपको? कैश, सो वी नीड टू एंटर द अमाउंट इन बैंक कॉलम। कैश दिखा तो बैंक में एंटर करना है, बैंक दिखा तो कैश में एंटर करना है, एज पर रूल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। द अमाउंट इज 2500, राइट। देन आफ्टर दैट लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज on 20 March paid for transport 600। पेड मतलब बिजनेस में से पैसे गए। we need to record this transaction on the payment side. First we'll write the date 20 March 2019 and here we have to write by transport, transport account। ट्रांसपोर्ट के लिए आप कितना पे करें? द अमाउंट इज ₹600 in the cash column. Then after that received cash from श्रीकांत 4700, डिस्काउंट अलाउड 300। तो जब कभी भी बिजनेस में कैश आएगा वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द रिसिप्ट साइड। टू ये कैश दिए कौन हमको? श्रीकांत, श्रीकांत अकाउंट, राइट। डिस्काउंट कितना हुआ? 300। व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 4700 and what is the date of this transaction? The date of this transaction is 22nd March. So in the date we need to write 22nd March 2018. Now let us see the next transaction, that is on 24th cash withdrawn from bank for office use। अब आप करें क्या? बैंक को गए,
कैश विड्रॉ करे, ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए लेके आके रख दिया ऑफिस में, किधर, कैश बॉक्स में. सो वेन एवर देर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट. तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है कि आप इमीडिएटली जर्नल एंट्री पास करना. व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ डिपॉजिट, कैश विड्रॉन, कैश अकाउंट डेट आर टू बैंक अकाउंट. अब इसको गौर से देखो, ये जर्नल एंट्री में टू बैंक के साथ है. सो वी हैव टू राइट हियर टू बैंक अकाउंट, and here we will write by cash account. So what is the date of this transaction? The date of this transaction is 24th and amount is 2000. So in the date we need to write 24th March 2019, 24th March 2019. And in the LF column we have to write C. C is an identification of contra entry, right? And always remember what is our rule. इधर बैंक दिखा तो अमाउंट किधर एंटर करते हैं आप, कैश में, दैट इज ₹2000. और इधर कैश दिखा तो अमाउंट किधर एंटर करते हैं आप, बैंक कॉलम में, दैट इज ₹2000. डन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज पेड टू श्याम 2000, डिस्काउंट रिसीव्ड 100. ठीक है, शाम को हम पे करे तो पैसे गए तो हमको किधर रिकॉर्ड करना है, ऑन द पेमेंट साइड, दैट इज ऑन 27th March. सो हियर वी आर राइटिंग डेट 27th March 2019 एंड बाई, किसको पे करें आप, शाम को, पेड टू शाम. Sham's account. What is the amount? Amount is, discount received is 100 and the amount is 2000. Done. Then after that, let us see the last transaction. Purchase stationery and paid through debit card. आप क्या करें, स्टेशनरी खरीदें और पेमेंट किसके ज़रिए से करें, डेबिट कार्ड से, तो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में से जाते हैं. सो the date of last transaction is 31st March 2019. So here we have to write by stationery account. We have to record this transaction in the bank column. क्योंकि आप डेबिट कार्ड से पे करें तो पैसे आपके बैंक में से कट होते हैं, राइट. सो द अमाउंट इज 1200 is the amount. We have done with everything. Now we will do the total of discount. ठीक है, पहले हम डिस्काउंट का टोटल करेंगे, दैट इज 300 एंड डिस्काउंट रिसीव का टोटल है 500. देन आफ्टर दैट लेट अस सी द टोटल ऑफ कैश कॉलम, 4900 प्लस 9800 प्लस 2500 प्लस 500 प्लस 4700 प्लस 2000. So the amount is 24,400. फिर when we observe this carefully, we will know that debit side is more than the credit side. ठीक है, तो जो टोटल ज़्यादा रहेगा वो दोनों तरफ लिखना है, ये हमारा रूल है, राइट. सो वी हैव टू राइट 24,400 on the debit side and same total will go on the credit side, 24,400. अब आपका काम क्या है, ये 24,400 में से कैश कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करना है. So let us see 24,400 minus 3,000 minus 1,600 minus 2,500 minus 600 minus 2,000. So 14,700 is the balance. 14,700 is the balance. Now let us see of bank. बैंक में डेबिट साइड कितना है, 5,000, 8,000, 9,10, 10,500. यही ज़्यादा है, तो जो टोटल ज़्यादा रहेगा वो हम दोनों तरफ लिख देते हैं. सो दिस इज 10,500 एंड सेम टोटल विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड, 10,500. लेट अस वेरीफाई, यस 10,500. एंड फ्रॉम दिस 10,500 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट, minus 2,000 minus 1,200. So the amount is 7,300. 7,300 is the amount. Now what we have to do, we have to write the date of this particular balance. Last transaction की date लिखना है, that is 31/3/2019. And here we have to write by balance carried down. See
oblique D. And if you are writing balance carried down, then it is our responsibility to brought it down. Balance carried down लिखे तो balance brought down करना आपकी ड्यूटी रहती. So this will jump and come here on the debit side. वो भी टोटल के नीचे आता है and the date will change. अगले महीने की पहली तारीख आती डेट, that is the first of next month. The 1st April 2019 will be the date of balance brought down. Here we will write to balance B oblique D. Okay. The balance of cash is 14,700 and the balance of bank is 7,300. From this we have completed problem number 12. In the next video we are going to solve problem number 13 of cash book. So till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.